Good morning students, welcome to Commerce Camp Odisha. Today we'll start with the part of negotiation in the negotiable instrument. Negotiation ro meaning कौन? किंदी से define करते देखो. Section 14 defines the term negotiation. Whenever a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person, काहागो मध्य से माने जदि काउ transfer करूची, so as to constitute that the person the holder thereof, the instrument is said to be negotiated. माने से कौन करची काउ मियर ट्रांसफर करले सेटा नेगोशिएशन कहि पायानी जदि से पर्सन एक्चुअली होल्डर हबो सेतोला हम सेटा को नेगोशिएशन कहबो. नेगोशिएशन एंड ट्रांसफरेबिलिटी रो बेसिक डिफरेंस हमें फर्स्ट क्लास रे ऑलरेडी डिस्कस करले. तो नेगोशिएशन माने होची ट्रांसफर which makes the receiver a holder. Transfer which makes the receiver a holder. Transfer which makes the receiver a holder. एडा कोचु कोन आमे negotiation. बुझी पालो एडा कोचु आमे negotiation. बुझी पाला नेगोशिएशन रो सिंपल मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर देथिले. एबे से कोची डिलीवरी हैला. तो सेक्शन 46 प्रोवाइड्स दैट द मेकिंग acceptance endorsement of a promissory note, bill of exchange or check is completed by delivery. बुझी पाला माने से कोन दोची नेगोशिएशन ट्रांसफरेबिलिटी डिलीवरी सब गुडा ऑलमोस्ट सिमिलर जिंसो बुझिला ना. डिलीवरी माने कोन गुटे आइटम हमको डिलीवर होची एली कहिले गुटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म we are actually receiving that item. The negotiable instrument or delivery माने कोन you are actually giving the negotiable instrument to particular person. तांको तमे हैंडल करियो दोचो से जिंसोडा बुझिला ना. से पर्सन होल्डर होची once होल्डर हेला ली कहले सेडा नेगोशिएशन हेला. जनरली मो जदी ताको दोची मो कहू तू ताको देई देली कहले ये गोटे मिडल मैन हैला खाली ट्रांसफर हैला नेगोशिएशन हेनी. डिलीवरी माने कोन you are actually handling the thing माने तांको तमे देई दोचो हैंडलिंग पावर ता सेडी. तो मेकिंग एक्सेप्टेंस और एंडोर्समेंट तीनटा जिंस भल से मार्क करो. एदे सेडा तमे बनेबो नाले जिंसडा थिबा जिंसडा एक्सेप्ट करबो नाले एंडोर्स करबो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सो दैट कोन से जिंसडा कंप्लीटली जणा को हैंडल करिया पई पड़ोची जणा को हाथ को पड़ोची. दैट इज डिलीवरी इन सेंस. बुझिला मु गोटे चार्ट बनौची लेखो. वॉइस इज क्लियर. वॉइस क्लियर अछि ना नै टिके कंफर्म करी को. थैंक यू. तो एबे फर्स्ट लेखो डिलीवरी रो मीनिंग. कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बुझेबाडा होचे बहुत इजी बट सिंपल वर्ड्स अगेन सिंपल लैंग्वेज रे लिखिबाडा होचे कष्ट. डिलीवरी माने कोन के बुझ न थियो गेडी बट ताको केमते एक्सप्रेस करबो. तो डिलीवरी मींस transferring the actual power of handling the negotiable instrument. Transferring the actual power of handling the negotiable instrument. Transferring the actual power of handling the negotiable instrument. In common scenarios, the delivery can be of two types. Generally, delivery kono दी प्रकार थाउची. One is actual delivery and another is constructive delivery. Actual delivery और constructive delivery.
देखो एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी रे गोटे बहुत माने स्लाइट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अछि, बहुत स्लाइट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अछि। मो गोटे एग्जांपल पर सेटा बुझि पारिबो। फर्स्ट तुम लेखो एक्चुअल डिलीवरी रो मीनिंग। In this situation, in this situation, the goods are physically transferred, physically transferred or handed over, physically transferred or handed over completely, completely. जहाँ भी जिनस अच्छे सेटा कौन फिजिकली ट्रांसफर हेला किंबा एक्चुअली सेटा कौन हैंडेड ओवर हेला बुझी पालो। देन से कुछ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एटी लेखो इन दिस सिचुएशन, in this situation the transfer of the property, the transfer of the property, the transfer of the property has taken place, has taken place, has taken place even though, even though, even though the property was, even though the property was not physically transferred, was not physically transferred, first example होची physical that is actual delivery बुझी पालो। बट काली एग्जाम अछि मो घरे अछि तमे एडी बसी पढुचो तो यू हैव सम डाउट तो से केस रे मो पाखरे टेक्स्ट बुक रहलानी यू आर एक्चुअली सेंडिंग द लिंक ऑफ द टेक्स्ट बुक तो लिंक जेतरा पठौछ सेडा होछ मेरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बुझी पालो। एक्चुअली मते बुक देले सेडा होछ एक्चुअल डिलीवरी बट व्हेनेवर यू आर सेंडिंग इट थ्रू अदर मींस अदर देन कोन फिजिकल एस्पेक्ट तो से केस रे सेडा हिजबो हमरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो प्लीज राइट ऑन द एग्जांपल गिविंग अ टेक्स्ट बुक टू योर फ्रेंड physically giving the online copy or giving the online copy or link of the book to your friend, this is constructed delivery. Other than this हमें पढ़िलु गुटे सेल ऑफ गुड्स एक्ट रे सिंबॉलिक डिलीवरी कोन थिला सेडा सिंबॉलिक डिलीवरी वेरी गुड गाड़ी थिबो सेडार चाबी जदी हमें देले सेडा सिंबॉलिक डिलीवरी हैला बुझी पालो। तो सेडा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केस रे भी हेई पारिबो इन फ्यू केसेस बुझी पालो ना। से जदी किछि लेखिकी देई दोछि कि लाइक मो तुमे जदी साइन करले तमरो से जिंसला पळा आसीबो कहगी तो ही सिंबॉलिकली टेलिंग दैट यू आर हैविंग द कंप्लीट राइट ऑफ हैंडिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बुझी पाछो दैट मे बी काउंटेड एज अ सिंबॉलिक डिलीवरी देयर। तो एडा होचे अपना एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ना देखो as between the parties standing in immediate relation delivery to be effectual must be made by the party making, accepting or endorsing the instrument or by person authorized by him in this behalf। तो से कौन कहूची एडा effectual माने actually effective हेबाउ थिले एडा किमती हबो जानछ ना जो पार्टी एडा बनौची जो पार्टी एडा एक्सेप्ट करची जो पार्टी एडा एंडोर्स करची किबा जो पर्सन ऑथराइज करिया पे ए समस्त भितरे के जाने कोन करियो के जाने से डिलीवरी जिंसडा हैंडल करिया अछि
माने सिंपल लैंग्वेज रे कह चली गले से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो पावर जा पाखरे अछि से जदी से केस रे सेडी छिडा आइछि तो वी कैन काउंट एज एन एक्चुअल डिलीवरी इफेक्टिव डिलीवरी कहि हम सेडा काउंट करि पारे क्लियर as between such parties and any holder of the instrument other than a holder in due course please underline other than a holder in due course other than a holder in due course it may be shown that the instrument was delivered conditionally or for a special purpose only and not for the purpose of transferring absolutely the property therein. तो से कौन कहछि जदि किछि पार्टीज अछंदी किमा इंस्ट्रूमेंट होल्डर अछंदी किमा होल्डर ड्यू कोर्स इंस्ट्रूमेंट जे भी अछंदी से केस रे कोन हबो इंस्ट्रूमेंट ता जदि कंडीशनली डिलीवरी होछि किमा किछि स्पेशल पर्पस पे डिलीवरी होछि एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्युटली द प्रॉपर्टी देयर तो से अल्टीमेटली गुटे जिनस हमको बुझौछि कि जदि होल्डर किंबा पार्टी अदर देन होल्डर अछंदी कि आउ के पार्टीज अछंदी तो देयर विल बी स्पेसिफिक कंडीशन जोडा फुलफिल करला परे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो ट्रांसफरेबिलिटी ना इफेक्ट हबो बुझि पारछ ना नै गुटे की इंपोर्टेंट पॉइंट एडा कंफ्यूज करि परिबो गुटे जिनस से कहछि होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन नॉट बी द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर डिलीवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स जे भी अछि से केबल डिलीवरी पे रिस्पांसिबल ही पारिबन ही इज जस्ट अ मिडल मैन मु कहितली मिडल मैन को केबल आमे दाई कहि परिबनी तो इट मे बी शोन दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली जदि किछ कंडीशनली इंस्ट्रूमेंट डिलीवर होची किबा स्पेसिफाइड कंडीशन ले डाउन होला पर डिलीवरी होची तो से पर्टिकुलर कंडीशन विल प्ले अ वेरी इंपोर्टेंट रोल इन दैट आ से कंडीशन फुलफिल करला पर आगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो जहा भी डिलीवरी अछि वी कैन काउंट इट एज एन इफेक्टिव वन बुझि पाला ना नै पुत्रे देखो इज इट क्लियर इज इट क्लियर कंफर्म करो ओके थैंक यू ओके तो देखो a promissory note bill of exchange or check payable to bearer is negotiable by the delivery thereof please underline negotiable by delivery thereof obviously तमे negotiability ता की करियो काउ जण को से ये देले आगो सेटा ट्रांसफर किमा नेगोशिएबिलिटी जहाले कहि परिया ना हमें इंदी खालरे तो नेगोशिएबिलिटी कहि परियानी मु तम से फोटो छाडी से चेक रो सेटा कोन नेगोशिएबल हे लागी नाही मु एक्चुअली देले जाई कि हबो यू हैव स्टडीड एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बुझी पाछ ना तमे देला पर फोटो छाडा कि हां ए चेक का हम पठेछि दैट विल बी अदर केस A promissory note, bill of exchange, or check is payable to order is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof. Please underline जदि two order अछि order माने कोन जेतोळे चाहिले से कोन पचरी पारिबो negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof endorsement और delivery thereof सहित कोन से negotiable करि पारिबो endorsement द्वारा भी सेडा कोन negotiable हे पारिबो क्लियर तापर देखो से दीडा केस लॉ विषय कहिछि इन भगवती प्रसाद वर्सेस पाहिल सुंदरी AR 1969 it was held when property in a promissory note is transferred by partition please underline transferred by partition जदि पूरा पूरी ट्रांसफर न करिकि पार्टली से ट्रांसफर करूछि the transferee is entitled to maintain his suit on it please underline entitled to maintain his suit on it entitled to maintain his suit on it. His rights cannot be defeated on the ground of non-endorsement. बुझी पाला माने से कोन कहू जान ना जदी किछि पार्टली से ट्रांसफर करछ काली हमें डिस्कस करथिलु जेतलो गोटे बिल दा हमें कट्ठारे जेतलो पठौछु we have to have it in lump sum रे हम सेडा को रोल करिकि ता पछरे साइन करू सेडा खाली बिल बिसरी को आइथिला एबे से कोन कहू जान ना से कहूची कि जदी किछि जिंस अछि प्रॉमिसरी नोट अछि जोडा कि पार्टली से पठौथिला पार्टली पठौथिला सब जिंस गुडथरा नै पार्टली पठौथिला से केस रे कोन हो जान ना से केस रे मध्य से एंडोर्समेंट करि पारिबो इमति नै कि से कहयो कि पार्टली पठौची कहि कि तू एंडोर्समेंट करि पारुनु कह तो से कहूची कि प्रॉमिसरी नोट जतळ को तू फुल्ली पठा पार्शियली पठा किमति भी पठा तू जहां भी करे एंडोर्समेंट ता पॉसिबल हे पारियो एंडोर्समेंट राइट ता तो पाखरे रहि पारियो इज इट क्लियर बुझी पाला सिंपल जिंस डाइट तो ए पाखरे लिखि दियो promissory note can be still endorsed
even if sorry एटा टिके भूल हैला अलगा करके लिखो promissory note can be still endorsed even if the thing is transferred even if the thing is transferred partially even if the thing is transferred partially बुझी पालो promissory note जहाँ भी अच्छी सेटा endorse करी परिबा even if it is transferred partially कौन डाउट अच्छी सेथरे second case law in Madhaki Venkati Swami versus MD it was held that in addition to the mode of transfer of a promissory note indicated in section 46 here are two other modes of transfer same कौन देखो other than the mode of transfer of promissory note see how here in this section mention करछि जेमति कि कौन से केमति ट्रांसफर करबे the first thing is by operation of law first thing is by operation of law माने कौन जदि law किछि मेंशन करछि ध्यान से सुनो टिके जदि law तुम मेंशन करछि कौन तमे पार्शियल लेगा ट्रांसफर करिवो किबा लेखि के ट्रांसफर करिवो किबा जदि न तमे से पैसा ड्यू अछि से दिन अगर ट्रांसफर करिवो जदि law रा किछि प्रोविजन टा मेंशन ही जोछि तो से केस रे कौन हबो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जदि हो चले कहले से ट्रांसफर टा गोटे अलगा केस हे जेबो सेकंड थिंग होछि ट्रांसफर एज अ choose in action please underline choose in action it's a very important point choose in action सेटर एक्सप्लेनेशन तुमको लिखियार अछि आई जस्ट चेक्ड आउट ए बिसरे गोटे क्वेश्चन टा भी आछि तमरो एग्जाम रे हैला तो मु जो जिंसो एग्जाम रे आछि ता ऊपर टिके इंपोर्टेंस दोछि अगेन कहि दोछि जो जिंसो लाइक नॉर्मली बुझिया कथा सेडार गोटे बेसिक एक्सप्लेनेशन मु देई दोछि ऑपरेशन ऑफ लॉ टा बुझिला ना रिपीट करिया अथरे मते खाली टिके को ताकि हम चूज इन एक्शन को जाई परिया प्लीज कंफर्म ओके आई विल रिपीट इट अगेन ऑपरेशन ऑफ लॉ रो जदी का कोन लेखियार अछि li कहले लेखिबी जनरल बेसिक जिंसडा सेडा तो लेखि दियो सेडी ऑपरेशन ऑफ लॉ से केस लो जहां भी अछि सेडी हैशटैग कर दियो ताकि हम एक्सप्लेनेशन लिख देबा अदर मोड्स ऑफ ट्रांसफर other modes of transfer other modes of transfer first case होची operation of law second case होची choose in action choose in action as per the transfer of property act choose in action as per the transfer of property act choose in action as per the transfer of property act बुझी पाला operation of law तळे लेखो whenever the different provisions of law whenever the different provisions of law imply the actual method of transfer
the actual method of transfer to be followed with respect to whenever the different provisions of law imply the actual method of transfer to be followed with respect to different parties with respect to different parties सेटा होची कोन ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ दिस इज नोन एज ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कार किछि डाउट अछि एथिरे ऑप्शन ऑफ लॉ क्लियर ना होना बुझला ओके फाइन एबे लेखो ओके ओके थैंक यू तो choosing action is a please write down chose in action is a chose in action is a legal term chose in action is a legal term for a personal right to property 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 that can only be enforced through a legal action example contractual debts actually sir debts pronounce करछनी but it's debts हैला b shall be silent here तो choosing action रो मेन जिंस कोन जाना इट्स अ लीगल राइट फॉर अ पर्सनल राइट टू प्रॉपर्टी गुटे प्रॉपर्टी अछि सेटा ऊपर जहां भी पर्सनल राइट एस्टैब्लिश हेछि सेटा एनफोर्स करबा लीगल ऑब्लिगेशन लीगल सपोर्ट दरकार माने सिंपल राइट करार अछि जने जनारो किछि पैसा नै चली पर सेमान भीतर कोर्ट से कोर्ट जहां भी से ऑर्डर पेमेंट कर रहे तो एटा पीरियड जो पेमेंट करे से कहू छी से हम केस इन कोर्ट बहुत स्ट्रांग जिंस तो बाध्य है कि से जिंस लोक माने पेमेंट करियर अछि से इन्वॉल्व है कि से पेमेंट कर तो अल्टीमेटली गुटे जिंस कोर्ट तुमको फोर्स करछि ए पर्टिकुलर पीरियड भीतर पेमेंट करबै काहेकि हे पारे से लोक मांगुछि सेटे के लाइक इलीगल लोक हे पारे सेटे के मिसबिहेव करिया लोक हे पारे किंबा ए जो लोक माने जो मांगुचंदी से टिके मिसबिहेव करिया लोक हे पारे कोले रीजन हो जिंस कोन होछि जानछ ना जो दीडा लोक भीतर जहां भी कोऑर्डिनेशन डा अछि से कोऑर्डिनेशन डा जिंति न भांगु और टाइम पीरियड भीतर जिंति पेमेंट हो से जिंस ऊपर से पेमेंट हेबा पई कोर्ट रो इंटरवेंशन डा मजरे आछि सो दिस इज नोन एज चूज इन एक्शन बुझि पाला ना नै तार किछि डाउट अछि लिखले कहबी इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बुझिला ओके एबे ठीक अछि वॉइस ता एबे सुबुची चूज इन एक्शन न आउथरे कहूची देन देखो चूज इन एक्शन माने होची गुटे पर्सन किबा गुटे प्रॉपर्टी ऊपर किबा गुटे लोन ऊपर गुटे पर्सनल राइट अछि हमर राइट अछि हमें जान
बट कोर्ट रो इंटरवेंशन कोर्ट रो इंटरफियरेंस टा हमें मझरे काहे आणुछु ताकि से जिंसटा इजीली पेमेंट हबो स्मूथ पेमेंट जिंदी हे पारिबो कोई इज इट क्लियर नाउ Yes, ma'am. ओके फाइन फाइन थैंक यू एबे देखो the only difference between the two modes is that while transfer by negotiation clothes are transferred with certain rights, assignment as a chosen action limits such rights. Please mark it very important mark करेडा गो से basic point of difference टा कहूची देखो एतिकी आगा paragraph टा मो कोन पे एते टाइम यूज that's a basic difference here बुझला ना तो underline करो transfer by negotiation clothes to transfer with certain rights किछि certain right provide करछि से transfer को बुझि पालो transfer को किछि right provide करछि but एडी कोन होछि जानछ ना limit such rights limits माने कोन किछि rights से नै जोछि ताडो बुझला एडी से राइट्स दोछि को केस रे नेगोशिएशन केस रे ट्रांसफर को किछि राइट्स दोछि बट कोन चूजिंग एक्शन रे से किछि राइट्स ताडू नै जोछि as the transferor had in the document the assignee takes only subject to equities in favor of the maker an assignee of a promissory note otherwise than by endorsement such a transfer by means of writing under section 130 of the transfer of property act can see on the promissory note तो एतिकी सब जिंस किछि दरकार नै मो जोडा कहली भल से रखम नेगोशिएशन रे से किछि राइट्स दोछि आ चूजिंग एक्शन रे से किछि राइट्स नै दोछि तो एडे लेखा कौन कहला सिए नेगोशिएशन आउ चूज इन एक्शन इमति भी क्वेश्चन से पचार दबो कि दीडा जरा डिफरेंस को कहगिरी गोटे प्रोविजन रो से डिफरेंस ता भी पचारि परबो नेगोशिएशन रे से कौन कहउची provides or gives certain rights to the transferee को किछि राइट से प्रोवाइड कर दोछ त निज आड बुझि पाला तो बट चूजिंग एक्शन रे कोन करछ जानछ ना limits or takes back मु काहे दीडा जा वर्ड से लिखुची काहे लॉ लैंग्वेज और तारा अल्टरनेटिव वर्ड त हम बुझि पारछ इमते नै कि तमे सिंपल लैंग्वेज रे लिखियो कोइ सिंपल लैंग्वेज टा होतो तमे मन रखिया पाए बट यूज करे रछ हमरा लॉ लैंग्वेज आबे वी आर नॉट बीकॉम स्टूडेंट्स के हमें जनरली किछ भी लिखि देबा सर वी नीड टू यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज दैट limits or takes back the rights few rights लिखियो few rights from the transferee second point of difference लिखो courts interference courts interference or intervention courts interference or intervention is not mandatory courts interference or intervention is not mandatory एडी लीगल इंटरफियरेंस लीगल माने कोन कोर्ट legal interference is mandatory legal interference is mandatory is it clear किछ डाउट अछि कारो negotiation and choosing action ro since it's a new topic
Okay, fine. Thank you. ଏବେ ଦେଖ negotiation is of two types से କହିଥିଲା negotiation by delivery negotiation by endorsement negotiation meaning ଚାଲେ ତମେ ନିଜେ କହି ଦେଇ ପାରିବ କି ସେଟା either actually ତମେ ଦେଇ ଦବ ନହେଲେ କାହା ଦେଇକି ତାକୁ ଦେବ କହିବ ତ negotiation by delivery କଣ ବେସିक ଜିନିଷ ଯାବ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ତମେ already ପଢି ଦେଇଛ ତ ଦେଖ subject to the provisions of section 58 a promissory note bill of exchange or check bearer is negotiable by delivery thereof तो कौन से कोर्स देखो promissory note bill of exchange or check payable to bearer खाली payable to bearer टा मार्क करो एंती is negotiable by delivery thereof bearer माने के एडी के कोई पर bearer माने के who is a bearer bearer माने कौन जे bear करছে से bearer आओ नहीं bearer माने कौन जो पर्सन यहाँ आंसर स्कोप चढ़ इंटरैक्शन इज इम्पोर्टेंट एमती नहीं कि तमे हाई मारथियो मो जहाँ भी कही दउथी चलथियो हु इज अ बियरर को जे बियरर रो डेफिनेशन कहबो ताकू गोटे टेडी बियर मिलो अरे बियरर इज अ पर्सन हु होल्ड समथिंग बुझला जनरली फर्स्ट जे भी धरिकी लाइक फर्स्ट जे भी होल्ड करिकी रखुची whoever is holding the instrument for the first time is a bearer बुझी पाल as simple as that तुमको इंस्टीट्यूट देखो माने मरवाने के लिए ज्यादा तरीका नहीं चाहिए गुड माने जहां भी से करेगी तुम मार दे पारियो किछि नथले से बियर रो डेफिनेशन जदी 3 मार्क्स को पचर देला एते तुम जानछ बियर 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 से केस रे कोन लागियो जानछ ना कोन हो जानछ ना तुम लागियो कि तुम चारटा लोक सहित कांटेक्ट रे अछि हला गुटे लोक जा सहित तुम डेली डेली गाड़ी रे जाउथिलो से लोक पाखरे तुमर गुटे तुम फोन रो चार्जर रहइलो बट से लोक रा तुम फोन नंबर जणा नै कि एड्रेस जणा नै किछि जणा नै एबे ना तुम से चार्जर पचरी परियो ना किछि करि परियो इमिति अछि बियरर रो डेफिनेशन दा डेली गोटे 10 थरा लेखा सुनथियो बियरर माने कोन बट डेफिनेशन जान तो इंस्टीट्यूट भी सिम्पली बोले दो हैला bearer is a person लिखि पारियो bearer is a person who carries or holds the instrument bearer is a person who carries or holds the instrument okay you had given the answer thank you yes Deepti the person who holds the instrument is a bearer fine holds the instrument कहि परियानी holds the instrument for the first time कहि परियो हैला that's the difference between the two sentences actually fine देखो there is an exception to this a promissory note bill of exchange or check delivered on condition that it is not to take effect except in certain event is not negotiable unless such event happens तो से कौन कोची कंडीशनल जिंस बिसरे कोची रे से कोची गोटे कंडीशन जदी से मजरे अछि से कंडीशन फुलफिल न हैला जे से केबेले नै पारियोनी कहि एटा कोन कहय जिंस की नहीं तो नेगोशिएशन बाय डिलीवरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर दीचु बेसिक जिंस खाली से गोटे पॉइंट अंडरलाइन करियो देखो एते जे कार कोन डाउट अछि की देखि पारियो भीतर एग्जांपल्स देखो थरे जदी को पॉइंट डाउट अछि ओके
देखो negotiation by endorsement. Endorsement ର meaning मन अछि? Endorsement माने कोन? कौन कोई परियो जा भी को ट्रांसफर हाँ आ जण दे दियो कहिरे ताहे दावर बेसिक लैंग्वेज ठीक अछि. Section 48 provides that subject to the sections of Section 58, a promissory note, bill of exchange or check payable to order is negotiable by the holder of instrument, holder by endorsement and delivery thereof. से कौन कुछ देखो payable to order मोटे के बेसी एक्साइट है कि नाड़ा काट देले जीवन रे ए मार्कर पेन वाला केबे हेला हबनी हैला बहुत जल्दी गलती को तुम भूल जाना चाहिए. लर्न टू फॉरगिव क्विकली. टाइम नहीं होनी ये जिंदगी एबे मु गोटे भूल कर देली इरेजर टा रागी होचे मो ऊपर ताको मने पड़े धीरे धीरे करी अरे बाबा सुने सुने देन जाई से सुने order is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof. एडी कौन थिला payable to bearer is negotiable by delivery thereof. एडी देखो bills of exchange payable bills of exchange payable to bearer bills of exchange payable to bearer is negotiable by delivery thereof बुझला एडी लेखा bills of exchange payable to order bills of exchange payable to order is negotiable by holder by endorsement or delivery thereof तापर से केस करे से कौन कहछि देखो it was held that where a promissory note payable to a particular person does not contain any words, please underline, does not contain any words prohibiting transfers indicating it was not transferable, it would be negotiable instrument payable to order. important point एडा जदि किछि promissory note अछि bills of exchange अछि कि आ को negotiable instrument अछि जतरी कि किछि words नै किछि transferability रो prohibition नै माने not should not be transferred to particular so and so person इमति किछि भी नै तो से negotiable instrument कोन जाचना it's a negotiable instrument payable by order तो ए बिट क्वेश्चन रे पचरी पारे जदि किछि ना सडी मेंशन हेनी prohibition नै सेतळ कोन हबो सेना negotiable instrument payable by order बुझिला तो ए पाखरे लेखो a negotiable instrument which does not contain any prohibitions shall be known as negotiable instrument
payable to order, negotiable instrument payable to order, negotiable instrument payable to order. Is it clear or not? Okay, fine. এটা আমি দেখিছিল অলরেডি। দেখো কনভার্সন অফ এন্ডোর্সমেন্ট ইন ব্ল্যাঙ্ক কোন দরকার খালি আন্ডারলাইন করো। Provides that the holder of a negotiable instrument endorsed in a blank way without signing his own name by writing above the endorser's signature are directed to pay to any other person as endorsee, convert the endorsement in blank full, and the holder does not thereby incur the responsibility of the endorsee. By writing above the endorser's signature a direction to pay to any other person as endorsee. खाली मझी लाइन केमती करिवो ना सिग्नेचर करिकी डायरेक्शन दे देबो कि तमे आको दे दियो। अगर ब्लैंक थिला एबे गोटे कोन खाली से जिनसडा फुल करिवो माने से कोन गोटे मेंशन करिवो से। ऑलरेडी डिस्कस ही जी खाली अंडरलाइन करो। एडी देखो से कहिछि कोन ना section 50 provides that the endorsement of a negotiable instrument followed by delivery transferred to the endorsee the property therein with the right of further negotiation, but the endorsement may by express words restrict, please underline restrict, or exclude such rights, or may merely constitute endorsing agent to endorse the instrument or to receive its contents for some other specified person. तो से कहूची जनरली एंडोर्समेंट माने एंडोर्समेंट ही जीवो अनलेस एंड अनटिल से मेंशन कर देछि कि तो ताको देना आपको देना एडा करना सेडा करना हैला। जदि तुम कुआ अछि रे पार्टी जाई कि पळा आसो ठीक अछि जेमति जीवा कथा जाई कि पळा आसबो कहि कि तुमको पार्टी जीवो बट ए रास्ता देई के जीवो ए टाइम भितरे घर को आसीबो हैला एतिकेला अमाउंट रो गिफ्ट दबो इंदी जदि जिंस जा कुआ तो सेमति करबो इट्स अ कंडीशनल एंडोर्समेंट दैट जदि नाय आली कहले कोन नॉर्मल एंडोर्समेंट बुझिला ना नहीं हेले पार्टी जिया ना नहीं को जिया जे पार्टी जी से एग्जांपल भी देछि देखो सेडी कोन कोन कंडीशन सेडी ही पर बेसिक जिंस एथरे किछि इंपोर्टेंट जिंस नहीं एथरे तुम कोन लेसन पाई पर जाउछ ना केबे केबे डिसअपियर ही जियो ताकि तमरो इंपोर्टेंस लोक जाने जेते जे तुम थिबो जेते जे कोन जणा पडियोनी ना इंपोर्टेंस तो टिके समय पे डिसअपियर ही जे लोक पूरा बाया पागल होई जे ऑनलाइन आसियोनी किछि करियोनी तापर आसी तापर देखियो केते कंसर्न मु जिंदी पूरा छटपट हेई रे लेखिया स्टार्ट कर दछ तो एडा मते इंपोर्टेंस ता सिखौची निजरो बुझिला देखो माने मो ता लाइफ रे जति इंपैक्ट पकी जे सेडा सीन अछि इमति नै कि से गायब हेले से इंपैक्ट पड़ेला बट से कोची मु नथिले तो मोर इंपोर्टेंस बुझो हला तो दैट्स व्हाट इट्स सेइंग सेति की पढ़ा से हां बुझिए तो करे इंपोर्टेंस in Kashmir versus National Saving Bank it was held that section 50 deals with what are known as restrictive endorsements. These are the restrictive endorsements तार मीनिंग कोन आछे जे पढिलो एटा मीनिंग कोन एटा होचे हमरो restrictive से पूरा बुझे देला एबे तार ना होछ जेमति होनी फिल्म जारे पूरा इंट्रोडक्शन दबो तापर कहियो की सेडा तो पूरा गुटे बैकग्राउंड म्यूजिक देगिरी देन से इंट्रोडक्शन करियो सिमिति से पूरा कहि देला एक्सप्लेन कर देला देन इट्स सेइंग दैट इट इज नोन एज रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जोथरे की विच इन एक्सप्रेस वर्ड्स माने कोन एक्सप्रेसली से लिखिबो क्लियरली मेंशन करिबो एक्सप्रेस वर्ड्स माने कोन क्लियरली मेंशन करिबो restrict or exclude the rights of the endorsee
It does not apply to cases where the endorsee wishes to satisfy the court by oral evidence that he was endorsee for a particular purpose only. Hela eta important marker. Restrictive endorsement does not apply to को cases रे restrictive endorsement apply होनी देखो को केस रे apply होनी ना जेतोळे को जे भी एंडोर्सी अछि he will provide some oral evidence माने कोन निजे जाई कि कहिबो कि निजे जाई किछि प्रूफ देखि कि बुझेबो कि ए पर्टिकुलर जिंसडा प्रोहिबिट हेई नथिला दैट्स व्हाई आई कैरिड आउट दिस थिंग बुझि पारला ना नहीं इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट रेस्ट्रिक्टिव एविडेंस टा को केस रे अप्लाई नहीं जानछ ना से जदी निजे को जाई प्रूफ कर दोछि कोर्ट रे कि ए जिंसडा रेस्ट्रिक्ट हेई नथिला दैट्स व्हाई मु करली कहिकरी से केस सेडा एप्लीकेबल नहीं तो अल्टीमेट जिंस कोन जदी कोर्ट को तमे किछि प्रूफ कर देई पारछो तो से जिंस वैलिड हेई जिवो ना नहीं ऑब्वियसली वैलिड हेई जिवो क्लियर इज इट क्लियर और नॉट okay okay Section 51 provides that every sole maker, drawer, payee or endorser, all or several joint makers, drawers, payee or endorser of a negotiable instrument may, if the negotiability of such instrument has not been restricted or excluded as mentioned in Section 50, endorse and negotiate the same. केते बेकार जिंस से कहला देखो से कहूची मु आपको डाकिली ताको डाकिली समस्त पार्टी करियो डाकिली जदी कार किछि प्रॉब्लम होनी समस्त आसी कार किछि प्रॉब्लम होले से रहि जियो बस दैट्स इट सेडा पे से गुटे सेक्शन नंबर ता बिरम सेक्शन नंबर 51 कोन कहूची ना जति कि जण अछन इन्वॉल्व हे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रे जदी कार किछि प्रॉब्लम होनी इश्यू होनी तो समस्त कोन जिन दी रेस्ट्रिक्शन नथला आले तार से कोन नेगोशिएट करे अगेन सेम थिंग इम्पोर्टेंस बुझे ना nothing in this section enables a maker or drawer endorse or negotiate an instrument unless he is in lawful possession or is holder there or enables a payee or endorsee to endorse or negotiate instrument unless he is a holder there तो से कौन कहू देखो मेकर किंबा ड्रॉयर जे भी अछि से एंडोर्स और नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट करि परिबो केते जाई unless he is in lawful possession or holder there माने से कोची लॉफुली से बिलोंग करछि ताकू से इंस्ट्रूमेंट ता देन ओनली से एंडोर्स किंबा जहां भी करि पारि नले से करि पारि एडा भी बहुत बेकार जिंस तो इग्नोर करो नेक्स्ट देखो section 52 provides that the endorsee of a endorser of a negotiable instrument may by express words of endorsement exclude his own liability please underline exclude his own liability से जदी कहि दोची के जे endorser माने के who is an endorser who is an endorser endorse करिबो the person who endorses the negotiable instrument तो सिए जदी लिखि दोची तार एंडोर्समेंट र पर्पस टा देखो मामा फर्स्ट थिंग होची whenever we are endorsing something सेडर दीडा पर्पस हे परियो either आमे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट र पैसा आसला बेले एडी नथिबा किंबा सेकंड थिंग होची कि आमे से टेंशन टा बियर करि परनु वसूली रो हला ना तो से केस हे पारे तो फर्स्ट केस रे तो तू किछि ले कहियोनु कि मोर लायबिलिटी नै कि मोर दाई नै कहि तो कहबे मु रहूनी तो तू टिके पैसा आन दे बट सेकंड केस रे कोन होची से जदी वसूल करि पारनी तो से कोन करियो जानछ ना आ जण को चाहि कहि दो कि मो द्वारा हे पारनी मु मोर लायबिलिटी ता छाड़ दोची तुमको मु पैसा दोची तमे हैंडल करो मु तुम एंडोर्स कर दोची तमे जाई पैसा आनो आ कागु ट्रांसफर करिया करे जहां खर्च करो बट एडी मु कोन करछ जानछ ना मोर पूरा पूरी लायबिलिटी ता एक्सक्लूड करि दोची clear or not excluding the liability meaning होची सेडा or make such liability or the right of the endorsee to receive the amount due कोन करची तार लायबिलिटी कार्ड देगिरी आको राइट हिसाब रे दे दोछ माने मते गुटे जिंस डे को लायबिलिटी और राइट ता गुटे पर्सन रो लायबिलिटी और पर्सन रो राइट ना नै तो से कहूची कि मु मोर मन रो टेंशन काट दोची बट मु तते राइट दोची कि तू जहां ले करि पारो बट वसूल करि के आन दे तो ता लायबिलिटी एक्सक्लूड करि के आको किछि राइट दे दोची को जिंस पई रिसीविंग द अमाउंट ड्यू जो अमाउंट ड्यू अछि ना से जिंस रिसीव करिया पई से किछि लायबिलिटी दे दोची therefore thereon depend upon the happening of a specified event although such event may never happen where an endorser so excludes his liability and after becomes the holder of the instrument all intermediate endorsers are liable to him बुझिला ए पॉइंट अबे हम आगरे पढ़ते थि मु कहली जति मासे कहले कि नाही मो लायबिलिटी हैंडल कर परिनी कोइ
देला तापर कहले कि नाइ नाइ एते बड़ जिंसटा मु किनि छाड़ देबे कहि आउथरे से पुनी जदि होल्डर हेला तो मझरे जेतिके भी एंडोर्सर्स अछंदी समस्त आउथरे रेस्पोंसिबल ही जिबे ना नाइ माने देखो कोच ए जे भी अछि डी ताकू बाकी अछि ए को के बाकी अछि डी बाकी अछि तो ए जिंसटा हैंडल करि पारनी तो से कोन करला बी को दे देला एटा सॉल्व देला ता लायबिलिटी कोन करला लायबिलिटी काटिगिरी माने ता लायबिलिटी एक्सक्लूड कर देला बी को दे देला बी कोन करला बी रो एते जा काम थाउची तो से कोन करला सी को देला एंडोर्स करला सी को एंडोर्स करला सी आउट जणो एक्स को एंडोर्स करला पैसा आनी पाई हला काई एक्स और डी पाख पाख रोचन तो से कहला एक्स को तू वसूल कर दे तो गुठरे कोन हला एबे एबे अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी एक्स पाख रे रहला ना नहीं हले ए जे भी अछि अमाउंट जहां भी सेडा होची 5 लाख रुपीस हला तो ए को गुड दिन सफर फ्लड लागिला कोन 5 लाख रुपीस इज वेरी बिग अमाउंट मु का हाथ रे एमती पूरा पूरी छाड़ दे पारिनी टेंशन नेले नेबी सिना मु आगा हैंडल कर तो से कोन कहला कि नाइ नाइ मो लायबिलिटी मु आउथरे नै जोच तो एमते कोन कहई एमते कहई नाइ हम कोन था तू मा को आउथरे दरकार को नो नो तो एमान सब जे भी अछंदी से माने आउथरे के का रेस्पोंसिबल होई जे ए को रेस्पोंसिबल होई जे ना नाइ तो बी सी और एक्स होचन हमरो इंटरमीडिएट एंडोर्सर्स तमे लिखि पारियो एडा इंटरमीडिएट एंडोर्सर्स माने कोन इंटरमीडिएट पडिया एंडोर्सर नै इंटरमीडिएट अली गले मझरे जे भी अछंती एंडोर्समेंट प्रोसेस रे से माने मिडलमैन बुझिला ना जे भी इन्वॉल्व अछंती जदी के नै खाली बी दाई हेई थांदा एबे सी एक समस्त पाखरे राइट अछि ना तो समस्त का रिपोर्ट करिवे ए को रिपोर्ट करिवे तो अल्टीमेटली डी रो अमाउंट रिकवर हबो इज इट क्लियर और नॉट किछ डाउट अछि कि पॉइंट रे लंबा पॉइंट बट सिंपल पॉइंट किछ डाउट अछि कि टिके का जिंस अछि हमर खाली अंडरलाइन करे जिंस अछि ओके आउथरे करबी फाइन देखो फर्स्ट थिंग होची एडा लोड हैला जे मु बेसिक एक्सप्लेनेशन देउ तमो देखो फर्स्ट थिंग होची जतलो गुटे पर्सन अछि जे भी के गुटे जिंस को धरि की लायबिलिटी धरि की रहउथला से गुटे लाइक लोन अमाउंट रिकवर करिया पे ता पाखे किछि लायबिलिटी थिला बट से केस रे कोन होची जनरली कोन क्लास से प्रेशर हैंडल करे पारलानी दैट मींस एंडोर्समेंट कर देला आउटे पर्सन को सो ए केस रे कोन हबो वंस से एंडोर्समेंट करि देला पारे जदी से किछि भी कोनी तो लायबिलिटी दा एमान ऊपर रहला बट जदी से कहछि कि नाइ नाइ मोर लायबिलिटी मु आगा हैंडल करबी मोर लायबिलिटी मु आगा हैंडल करबी से केस रे कोन हबो अली कहले वंस अगेन ये जतळ होल्डर ही होछि लायबिलिटी दा मागुछि तो जति की भी इंटरमीडिएट एंडोर्सर माने अछंदी तो पर्सन्स हु आर इन बिटवीन जे भी ता टेंशन दा हैंडल करछंदी एमाने सब कोन करिए जति की भी काम रो प्रोग्रेस ता अछि अगेन से बेसिक होल्डर किबा ओनर को रिपोर्ट करे इज इट क्लियर और नॉट सैंपल दा लोड ओके फाइन एग्जांपल दा देखो किछि डाउट अछि कहले पचरि पारियो किबा लिखि पारियो या आसिला देखो ए होछि हमर बेसिक एंडोर्सर माने ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बी सी डी बी होछि एंडोर्सर ए होछि एंडोर्सर आ एमाने सब एंडोर्सी बी होछि प्राइमरी एंडोर्सी एमाने होछि सी आ एक्स होचंदी इंटरमीडिएट एंडोर्सर्स एंडोर्सी सॉरी बुझला देखो खाली अंडरलाइन कर दियो स्पीड provides that the holder of a negotiable instrument who derives title from a holder in due course has the rights thereon of that holder in due course किछि भी जिंस ना एथरे बुझिया जिंस derives title खाली अंडरलाइन करो राइट्स thereon अंडरलाइन करो जे भी जदी किछि राइट्स डिराइव करूची किछि टाइटल डिराइव करची त मु कोन कहतली मते भोजी डाकिली मु तमु धरि जाई पारी मते डाकि नथि मु तमु धरि जाई पारी की नाही तो मो पाखरे जति की राइट अछि मो पाखरे जति की लाइक प्रिविलेज अछि सेडा मु तमु दे पारी बुझिला ना नहीं Section 54 provides that subject to the provisions contained as to cross checks a negotiable instrument endorsed in full endorsed in blank is payable to bearer thereof even although originally payable to order se kon कहउची subject to the provisions contained as to cross checks कोन जदी cross checks किछि हे होची
तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जोड़ा कि इंडोर्स हिची ब्लैंक रे सेटा पेएबल हबो काउ जानछ ना बियरर को पेएबल हबो केबे ओरिजिनली ऑर्डर करला माने देखो मु जदी गुटे जिंस लिखि दोछि कहूछि कि ए पर्टिकुलर पर्सन को मु जतोळ कहि सेतोळ तमे पैसा दबो तो सेटा हेला नै रे मु तुमको ब्लैंक आगा दोछि ब्लैंक चेक दोछि बट मु बैंक को कहि दोछि कोन जानछ ना मु जतोळ कहि तमे सेतोळ ताको पैसा दबो कहिला नै तो से केस रे कोन हला पेएबल बाय ऑर्डर हैला ना पेएबल बाय बैंक हैला पेएबल टू ब्लैंक हैला पेएबल टू ऑर्डर काईगी अल्टीमेटली पैसा के पास जेतळ तुम ऑर्डर करछ सेतळ आस कंफ्यूजन किछ नै आउथरे पचरी पारिबो बहुत बेसिक कांसेप्ट ता जदि मु कहि देली गुटे जिंस मु चेक ता पेएबल करि देबी तमे जेतळ जाई पचरिबो सेतळ पेएबल टू द ऑर्डर अली कहले जनरली तमे जेबे जाई पचरे सेबे दे देबो बट मु तुमको ब्लैंक आगा दोछ अल्टीमेटली कोन करछ जानछ ना जो बियरर येडा अछि ना जे पर्सन अछि ना मु कहूची मु जते जे कहिनी तो सेते जे से लोक पैसा दे पारो तो कोन हला सेडा पेएबल टू ऑर्डर हला मु ऑर्डर करला का पैसा आसी क्लियर then section 55 provides that if a negotiable instrument after having been endorsed in blank is endorsed in full the amount of it cannot be claimed from the endorser in full except by the person to whom it has been endorsed in full or by a person who derives the title. So, the person who specifically right to claim kariya pai only that person can endorse the thing. Only that person can endorse the thing. Hela, this is section number 55. Then the no writing on a negotiable instrument is valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount appearing to be due on the instrument. Please underline. It is important point. Say kochi no writing mane it shall not be valid. Co writing ta valid nahi na transfers only a part of the amount. Transfers only a part of the amount appearing to be due on the instrument. Appearing to be due on the instrument where such amount has been partly paid. Where such amount has been partly paid and negotiated for balance. And negotiated for balance. को जिनसडा हे पारियने से कहूची माने तमे जदी किछि लेखुच कहले पूरा पूरी इंस्ट्रूमेंट पय लेखियार अछि इमति नै अधा जिंस पय मुदाई अधा जिंस पय मुदाई नै सेडा पे अलग केस अछि तमे अटैच करके लिखिबो तमे पढथिला ऑलरेडी जदी किछि कंडीशंस अटैच करछो कि पार्शियल ट्रांसफर करछो तो किछि अटैचमेंट्स रखि कि तमे ट्रांसफर करियसी ना आ पूरा इंस्ट्रूमेंट ऊपर तो तमे लिखियोनी कि अधा जिंस पय आगा दाई कइरी हैला देखो लास्ट दीटा टॉपिक रहला हमर खाली ए पेज ता सरेबा. Section 57 provides that when a negotiable instrument has been lost, already a point, obtained from any maker, acceptor or holder by means of an offense or fraud or unlawful consideration, no possessor or endorsee who claims through the person who found or so obtained the instrument is entitled to receive the amount due thereon from such maker, acceptor or holder or from any party prior to such holder unless such possessor or endorsee is of some person through whom he claims was the holder thereof in due course. किछि नै एडी जदी हजियला फ्रॉडुलेंट मींस रे ऑब्टेन हेला किछि भी हेला तो अगेन तमे काउ पचरि परियो जा पाखरे राइट अछि होल्डर इन ड्यू कोर्स को पचरि परियो जे होल्डर थिला ताको पचरि कहिथिली गुटे एग्जांपल ला काउ मन अछि ए बिसरे गुटे एग्जांपल देथिली जदी किछि हजियला सैम्स लैब रे एग्जांपल देथिली जदी किछि हजियला गोटे प्राइवेट कंपनी के प्राइवेट कॉलेज चली कहले से जाई पचरियो पेनल्टी तमे ताको मांगले दे दो जदी गोटे गवर्नमेंट कॉलेज चली कहले बहुत से बुलेबो आ बहुत से खटेला पारे जाई कि सेडा दब तो से सेडा कोच जदी सेडा लॉस्ट हे होची फ्रॉडुलेंट मींस ऑब्टेन हेला कि किछि भी रीजन लागि कैंसिल हेला तो जिंस कोन हबो सेडियली कहले तमे जाई गिरी अमाउंट जहां भी एंटाइटल अछि सेडा पेमेंट करगी यू कैन ऑब्टेन इट बेसिक पॉइंट है किछि इंपोर्टेंट नहीं. Section provides that the holder of negotiable instrument who has acquired it after dishonor. After dishonor माने गुरथरे सेडा कोन गुरथरे तार पोपट हेला तापर सेतळ अप्लाई माने ऑब्टेन करची whether by non acceptance or non payment with notice thereof or after maturity has only as against the other parties the rights thereon of his transferor. माने कोन कोची जानजना A और D रो एग्जांपल ला नेली A और D
ए कौन डी रु वसूल करिया भाबिला हैला ड्यू डेट थिला 15th मार्च 15th मार्च को तारा अकाउंट रे पैसा नहीं डिसऑनर हेला तो ए बहुत लाइक सेंसिटिव से बहुत डिप्रेस हेला से कौन कला बी को दे देला कहला तू ए जिंसटा हैंडल कर तो ए कौन से जिंस लाइक ए कौन दबो बी को ए कौन प्रोवाइड करिवो इंस्ट्रूमेंट रो राइट्स प्रोवाइड करिवो को राइट्स प्रोवाइड करिवो तो जहां भी करिगिरी ताडू पैसा वसूल कर तो ए बी को केति की राइट दे पारियो जेति की ता पाखरे अछि ना नै जा पाखरे जेति की राइट अछि सब जा राइट का दे देबो बी को दे देबो बी कोन करियो डी रु वसूल करिके आनी की अगे ए को दे दो सत्या से कहले इज इट क्लियर और नॉट प्लीज कंफर्म लास्ट थिंग देखो एकोमोडेशन बिल अरे बाबा लास्ट हेला any person who in good faith or for consideration becomes the holder after maturity of a promissory note or a bill of exchange made drawn or accepted without consideration for the purpose of enabling some party thereto to raise money thereon may recover the amount or bill from any other party से कौन कोच देखो जदि गोटे पर्सन आसिला ये बुलिया पळेला पर्सन सर एकोमोडेशन बिल रे कौन कोच से देखो प्लीज राइट डाउन डाकुचे एकोमोडेशन बिल रहेला फाइन जर्नल लिखी कि एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट an accommodation bill is a draft or a bill an accommodation bill is a bill or a draft an accommodation bill is a bill or a draft created without consideration to help someone else get credit or raise money get credit or raise money accommodation bills are also known as wind bills wind bills wind bills तो से कौन कहूँ देखो गोटे पर्सन को से हेल्प करिया पई किछि कंसीडरेशन न थाए कि आ जण को ड्राफ्ट हिसाब रे दे दोछ हैला ता पाखरे से बिलडा अछि से मनोर का गोटे हेल्प करिया चाहछ बट ता पाखरे पैसा नै से बिल अमाउंट से पैसा रेज करि परियो से जाई कि से बिलडा एनकैश न करी से ता बिलडा ता नारे कर दोछ हैला से कौन कहना दे मेरा प्यार तेरा नाम कर दिया इन स्टार बिल कौन करछि इसका नाम कर दिया तो एडा होछि गोटे एकोमोडेशन बिल इट्स आल्सो नोन एज विंड बिल एडी लेखा the person who creates the bill last point person who creates the bill is known as person who creates the bill is known as
accommodation party is known as accommodation party is known as accommodation party. Yes. Clear? बुझला? Doubt नहीं किसी? Fine. Thank you so much.